guests and invited countries, and the multilateral organizations like UNCTAD, WTO, IMF, and all the various multilateral organizations who have got together amidst very gloomy geopolitical and uncertain global economic environment where international trade has slowed down, inflation is high, interest rates are going up, world economies are getting into recession. Developed economies, particularly, are in the throes of high inflation, low growth, job losses. Many developing nations are facing foreign exchange crisis. Amidst all these challenges, India is the bright spot which almost everybody in the world today recognizes and respects. Different world leaders have shown the confidence they have in Prime Minister Narendra Modi. The Italian Prime Minister recently said he's the most loved leader of the world. Many world leaders are looking up to his leadership to resolve the severe crisis in other parts of the world. Some news reports seem to suggest that India will continue to be the fastest growing large economy in the years to come, possibly in the decades to come. We have consistently maintained high growth. We have been able to overcome the challenges of the COVID pandemic. Next year, we are again expected to be the world's fastest growing economy, particularly amongst the large economies. And where, on the one hand, developed countries in Europe or in the United States, Canada, are seeing inflation like never before, once in 40 years, once in 30-year inflation, where usually inflation used to be 1.5%, 2%. They are facing 10% and 11% inflation. For such countries, India is a role model in efficient economic management, where we have been able to contain the inflationary pressures. We are just a tad over the Reserve Bank of India denominated band of 2 to 6%. To all of you, I would like to convey my greetings to the people of Mumbai, Maharashtra, and across the country on this very auspicious occasion of Ram Navami. The Navratras get over today. It has been a period of fasting for many people, and of course the nation is in a very celebratory mood, given that the Ram temple is going to be ready by the end of this year. The work there is going on at a very scorching pace, and we are all very eagerly looking forward to finally being able to celebrate Lord Ram's birth at his birthplace. India is the president of the G20 this year, our 75th year of independence. As we celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, it's truly remarkable how the whole world is looking up to India's leadership, looking up to Prime Minister Narendra Modi, playing an important role in the world geopolitically in terms of strengthening the economy of the world and also championing the cause of developing nations and less developed countries, particularly from the global south. The G20, with the motto Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family, truly reflects India's ethos and the vision of the Prime Minister, one earth, one family and one future, helps set the tone of the various working group meetings
of the G20. We have had our first meeting of the Trade and Investment Working Group in the financial and commercial capital of India, Mumbai, my home city, since 28th of March. It's a 3-day gathering of officials from all the member countries of G20, all the guests and invited countries, and the multilateral organizations like UNCTAD, WTO, IMF, and all the delegates in Mumbai yesterday. On the 28th, we had an international conference on trade finance with 2 panel discussions on the way forward on how trade finance will bridge the gaps that the world faces today. On the 29th, yesterday, trade for growth and prosperity was discussed. Trade and resilient supply chains, global value chains were discussed over 2 sessions. And addressing economic shocks in supply chain, where many supply chains have got disrupted, were discussed with all the member countries. Today on Ram Navami, we are deliberating on integrating MSMEs in the global trade. We are looking at building efficient logistics for trade and leveraging digital public infrastructure, which has been India's pride over the last few years. The way the Honorable Prime Minister has brought digital technologies to the fore to help us in a variety of activities. How Digital India has penetrated the length and breadth of India is certainly giving the pathway for other countries as they engage much more in the digital world. Our digital applications, be it our UPI, the United Payment Interface, which has made fintech truly affordable and very, very low cost, so that India today boasts the highest number of digital financial transactions anywhere in the world, to our effort to democratize and socialize e-commerce through the open network for digital commerce. Whether it is COVID app, which helped bring healthcare and our massive 220 crore vaccine program to the common man seamlessly, transparently and efficiently, or it is the confidence with which India has developed 5G technology indigenously in every sphere, serving the people of India, serving the poor of India, serving the middle class of India. We have been able to use technology in a big way, and today we are showcasing our experiences, our learnings, and our model of development to the rest of the world. Thank you very much. For many, many years post-independence, right until 2012-13, I think the current streak of 9 years of very reasonable inflation, where over a 9-year period we've seen probably an average of 5% inflation, is clearly the golden era of India in terms of macroeconomic management, strengthening the fundamentals of India's economy, and preparing India to face the challenges before the world. The Trade and Investment Working Group meeting is addressing the challenges on 5 key priority areas. They are focused on trade, they are focused on sustainability, they are looking at areas around resilient supply chains, they are looking at the area of inclusive growth, and they are looking at sustaining growth in the years to come so that we can have more stable economies going forward. We will have 5 meetings. First is in Mumbai, as I said.
over 100 delegates from all the G20 countries and the 8 invited countries, 10 regional and multilateral organizations have assembled in Mumbai. I am grateful to the Governor Shri Ramesh Bes, who joined us yesterday in our welcome that we gave to all the delegates in Mumbai yesterday. On the 28th, we had an international conference on trade finance with 2 panel discussions on the way forward on how trade finance will bridge the gaps that the world faces today. On the 29th, yesterday, trade for growth and prosperity was discussed. Trade and resilient supply chains, global value chains were discussed over 2 sessions. And addressing economic shocks in supply chain, where many supply chains have got disrupted, were discussed with all the member countries. Today on Ram Navami, we are deliberating on integrating MSMEs in the global trade. We are looking at building efficient logistics for trade. WTO रिफॉर्म एक बहुत पेचीदा विषय है, सरल नहीं है। जो विकसित देश हैं उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं, विकासशील देशों की प्राथमिकता अलग है, और जो देश अभी भी बहुत कम विकास से जूझ रहे हैं उनकी तो समस्याएं और भी गंभीर है। भारत एक प्रकार से एक ब्रिज है विकसित देश और गरीब देशों के बीच में। हम विकासशील देश जरूर हैं, पर गत दशक वर्षों में जिस प्रकार से भारत की आवाज बुलंद हुई है दुनिया के पटल पर, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्व समझ रहा है कि भारत ही एकमात्र एक ऐसा देश है जो संतुलन लाएगा विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में भी, विश्व की विचारधाराओं में। ऐसी परिस्थिति में भारत के ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। और आपने देखा होगा पिछला जो WTO की मिनिस्टरियल मीटिंग हुई जिनीवा में, उसमें कहाँ लगभग विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में ऐसी दरार खड़ी हो गई थी कि मीटिंग के तीसरे चौथे दिन बुधवार शाम को लगभग सब इकट्ठे हो गए थे कि अब इस मिनिस्टेरियल को विराम देते हैं, एक फेल्ड मिनिस्टेरियल करार करके हम यहाँ से निकलते हैं। तब भारत ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रस्तावना रखी कि एक और कोशिश की जाए, दोनों पक्ष एक दूसरे की बात सुने, समझे, सहन शक्ति भी दिखाएं और संवेदना भी दिखाएं, एक दूसरे के विषयों के प्रति आधारों के ऊपर चर्चा हो, और उस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बुधवार शाम से शुरू कर शुक्रवार सुबह तक लगातार बिना विराम दिए चर्चाएं हुई, बड़ी बैठकें हुई, छोटी की बैठकें हुई, लोगों ने अपने विचार विमर्श रखे, जिसमें भारत लगभग एक नेतृत्व देता रहा अलग अलग विषयों पे। और मैं समझता हूँ कि 8 एग्रीमेंट उस WTO में होना ये भारत की एक बहुत बड़ी विजय थी। भारत के हर विषय पे हम सफल रहे, भारत के दिखाए हुए रास्ते पे अलग अलग देशों में समन्वय बनाने में सफल रहे, और उससे जो भारत की छवि है पूरे विश्व में और मजबूत हुई है, और भारत के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति विश्व का विश्वास, साधारणतः तो G20 कोई लीगली बाइंडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक समूह है अलग अलग देशों का जो विचार विमर्श करके आम सहमति बनाते हैं कि कैसे विश्व को हमने सबने मिलकर आगे बढ़ाना है और विश्व में कैसे समृद्धि 700 करोड़ लोग तक पहुंचे। पर उसके बावजूद ये एक बहुत बड़ी आवाज है, बड़ी पावरफुल आवाज है। 85% विश्व की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्थाएं है, वैल्यू है, वो इन देशों के अंदर सम्मिलित है। तो एक बहुत मजबूत आवाज है। भारत का इस वर्ष G20 का प्रेसिडेंसी
मिलना, हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम प्रेसिडेंट G20 के बने हैं, हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं समझता हूँ पूरे देश में इसका उत्साह है। स्वाभाविक रूप से जो चर्चाएं होती हैं उसमें से सभी देश सीखते हैं, समझते हैं और आगे का मार्ग निर्धारित करते हैं, रास्ता बनाते हैं कि कैसे जो जो चर्चाएं हुई हैं उसमें से हम एक दूसरे के साथ मिलके इनको लागू करें। और भारत तो एक ऐसा देश है जिसमें सस्टेनेबिलिटी या एक नेचर के प्रति संवेदना या चिंता आज से नहीं पर हजारों वर्ष से रही। भारत में तो हम पेड़ और पौधों को भी, चाहे वो हमारे नदियां हो, चाहे वो हमारे पहाड़ हो, हर जीवित अथवा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी को, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सभी को हम बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। तो और उसको सुरक्षित रखने में हम सब जुटे रहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हो, कार्बन का इन्फ्लुएंस कम हो विश्व में, सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को और प्राथमिकता मिले। आप जानते हैं कि पेरिस में हमने तय किया था कि भारत ने ऑफर किया था कि हम अपनी पूरी जो एनर्जी कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी पावर की, इसको 40% 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से करें। हमने वो लक्ष्य 2021 में ही कर लिया, 9 वर्ष पहले। और अब प्रधानमंत्री जी ने नया लक्ष्य देश के समक्ष रखा है कि अब 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा भारत में स्थापित करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन हो, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करके विश्व व्यापार में, निर्यात में भेजा जाए। और भारत एक प्रकार से अगर मैं कहूँ समस्या नहीं समाधान का एक मार्ग बने, ये मैसेज आज पूरी दुनिया में गया है। वी आर नॉट एक चक्रव्यूह जो देश हित और जनहित का चक्रव्यूह, वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द फ्यूचर, ये भारत ने परिचय दिया है। और आगे भी भारत इस वर्चुअस साइकिल में नए अवसर भारत के उद्योग को, भारत के स्टार्टअप्स को, भारत के MSME सेक्टर्स को, भारत की डेयरी को, भारत के किसानों को, अलग अलग लोगों को इसमें से देने जा रहे हैं। हम नए नए देशों के साथ, खासतौर पे विकसित देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रहे हैं। इन FTA से हमें बहुत सारे नए बाजार भारत के सेवाओं के लिए और भारत के सामान के लिए खुलेंगे। जीरो ड्यूटी पे जब भारत के वस्त्र क्षेत्र के टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, हमारा किसानों का प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हमारे डेयरी के प्रोडक्ट्स, हमारे सेरामिक के प्रोडक्ट्स जो साधारणतः मोरबी से आते हैं, हमारे ऑटो कॉम्पोनेंट्स जो हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, अलग अलग प्रदेशों से आते हैं। टेक्सटाइल तो देश भर में फैला हुआ है और अब नए 7 PM मित्र पार्क से हम टेक्सटाइल सेक्टर को और एक नया बूस्ट देने जा रहे हैं, और एक बड़ी छलांग वस्त्र क्षेत्र लेने जा रहे हैं। हमारे हैंडीक्राफ्ट्स, हमारे हैंडलूम्स जो देश के कोने कोने में प्रसिद्ध है। मैं समझता हूँ आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ी अवसरों की बौछार भारत में आने वाली है और हमारे युवा युवती इसको पूरा अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने में सक्षम है, ये मेरा मानना है। कि ग्लोबल ट्रेड के इश्यूज में बायलैटरली जो रुपी ट्रेड हम करने जा रहे हैं या क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की जो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स की तरफ भारत जा रहा है, वो तो बायलैटरल डिस्कशन होती है। कई बार इन मीटिंगों के साइडलाइंस में भी डिस्कशन होती है, लेकिन ये रिजर्व बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उस इनिशिएटिव को लीड कर रहा है। कॉमर्स जरूर ट्रेड मिनिस्टर्स को इस चीज़ में प्रोत्साहित करता है कि वो लोग भी निवेश के लिए और व्यापार के लिए इस दिशा में जाएं। उदाहरण के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से सबसे पहले मार्च 2022 में ये चर्चा हुई थी कि हमने क्रॉस बॉर्डर ट्रेड UAE के साथ रुपए में करना चाहिए, निवेश भी सीधा रुपए में करना चाहिए, बजाय कि हम रुपए को पहले कोई और करेंसी में कन्वर्ट करें, वो वहाँ जाके फिर दिरहम में कन्वर्ट हो। तो इतने सारे लेवल्स पे कन्वर्जन करने से जो आमदनी है हमारे निर्यातकों की वो घट जाती है।
लेकिन सीधा अगर, क्योंकि हमारा बड़ा बैलेंस ट्रेड है, उल्टे कुछ ना कुछ सरप्लस ही है भारत का, नॉन ऑयल ट्रेड को देखें तो बड़ा सरप्लस है यूएई के साथ। तो चर्चा वहाँ से शुरू होके आज एक पूरे विश्व में इसकी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाई जा रही है अलग अलग देशों से, और वो बायलैटरल होती है, ये इस G20 फोरम उसका साधन नहीं है। Sir, Anurag from BT Now. So